Assalamu alaikum guys, this is 30th episode of People's Podcast Pakistan. इसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे एक और एलिगरी बाय प्लेटो. हम लोग प्लेटो के डायलॉग्स को थ्रू कर रहे हैं. we've done Phaedrus, we've done Republic and Phaedrus वगैरह. इसमें हम बात करेंगे about the Allegory of the Cave. Allegory basically it's kind of a metaphor, but difference ये होता है कि metaphor is a brief figure of speech, लेकिन एक एलिगरी में पूरी एक कंप्लीट स्टोरी होती है जिसमें कैरेक्टर्स वगैरह होते हैं टू काइंड ऑफ सर्व द सेम थिंग एज अ मेटाफर. बट ये एलिगरी जो है ये पेश करता है प्लेटो इन द 7th बुक ऑफ द रिपब्लिक. सोक्रेटिस बेसिकली बात कर रहा होता है प्लेटो के भाई से, ग्लाउकॉन से, और वो उससे एक divided liner concept पेश करते हैं which we've already gone through in the Republic वाली series. We made 3 parts on the Republic, या शायद 4, और हम उसमें बात कर रहे थे about how a person can become a true philosopher, how a person can go from being at the bottom of the divided line to being at the 4th stage, which is the world of the forms, or how he can grasp the reality. तो Socrates उसमें एक एलिगरी पेश करता है which is the Allegory of the Cave. हमने रिपब्लिक की सीरीज में बड़ा ब्रीफली टच किया था इसको, बट इस एपिसोड में वी गो थ्रू द डिटेल्स. बेसिकली द एलिगरी ऑफ द केव इज काइंड ऑफ एन एनालॉजी टू शो हम सबकी कलेक्टिव इग्नोरेंस के. बेसिकली सोक्रेटिस एक पिक्चर पेंट करता है और वो दिखाता है कि एक केव है और उस केव में हम सब पैदा होते हैं. वी आर ऑल बॉर्न इनटू दैट केव, और हम बीइंग द प्रिजनर्स ऑफ दैट केव वी आर बाउंड बाय चेन्स इन अ वे कि हम अपने राइट पे नहीं देख सकते, लेफ्ट पे नहीं देख सकते. वी कैन नॉट लुक बिहाइंड अस, बट वी कैन ओनली लुक इन फ्रंट ऑफ अस एज लॉन्ग एज वी आर इनचेन्ड. एंड हमारे पीछे एक फायर है और उस फायर से पीछे एक पार्शियल वॉल है. उस पार्शियल वॉल के ऊपर कुछ लोग खड़े हुए हैं जो स्टैचूज वगैरह से या फिर टॉयज वगैरह से शेडोज क्रिएट कर रहे हैं, जो कि हमारे सामने वाली दीवार पे कास्ट हो रहे हैं इन चीज़ों के शेडोज बिकॉज ऑफ द फायर बिहाइंड अस. और हम ये शेडोज देखते हुए बड़े होते हैं. वी लुक एट द शेडोज ऑफ मैन, ऑफ ट्रीज, of plants, of everything. We just see shadows for the most part, or in the most case for the entirety of our lives. और हम यही shadows देखते हुए बड़े होते हैं और हमें लगता है कि these shadows are the most real things, while these are only the images or the reflections of the most real things. But होता ये कि हम सब prisoners हैं, right? We are all bound by chains so that we can only look in front of us. But one of us breaks his chains or her chains, and वो जो इंसान होता है वो अपने पीछे देखता है and he sees कि अच्छा ये सारी स्कीम थी कि मेरे पीछे एक आग जली हुई है, इसके पीछे एक पार्शियल वॉल है, उसके ऊपर लोग खड़े हुए हैं जो शेडोज कास्ट कर रहे हैं on the walls in front of me. So when he understands this, he sees that it was only a lie, it was only ignorance which made him believe कि अच्छा these are the most real objects. He understands कि अच्छा वो बाहर की तरफ देखता है जहाँ से रोशनी आ रही होती है, वो कहता है अच्छा इस केव से बाहर भी एक दुनिया है. He becomes acquainted with his own ignorance and the fact that there might be some other reality than that which he was born into. अब ये होता है कि he gets out of the cave, right? वो केव से बाहर निकलता है and he finally catches a first glimpse of the sun, and he sees कि he's partially blinded by the light of the sun, क्योंकि इसने इतनी ज़्यादा अपनी ज़िंदगी का पार्ट, इतना सिग्निफिकेंट पार्ट उसने अंधेरे में और उन शेडोज की प्रेजेंस में गुजारा होता है कि वो इतनी ब्राइट लाइट उसकी आंखें उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं, विच इज़ काइंड ऑफ एन एनालॉजी टू शो हाउ कि अगर आप अपनी पूरी जिंदगी इफ यू लिव्ड इन इग्नोरेंस, so when the truth presents itself to you, the truth being the sun, you might not be able to recognize it, or you might not be able to endure the truth if you've lived a lie your entire life. So ये जो इंसान है वो देखता है सूरज को और वो देखता है कि अच्छा this sun is the source of everything, the sun is the source of life, this sun causes life to be and everything. He looks at the trees, the plants, everything around him, and he sees कि अच्छा these are the most real things, right? अब ये सीन होता है कि when that prisoner who is no longer a prisoner, who's escaped the cave, he goes out and sees the world for what it is. He grasps the entire reality, the world of the forms in Plato's sense. He wants to go back to the cave to kind of educate the people, and जो बाकी लोग वहाँ पे होते हैं उनको बताने के लिए कि अच्छा तुम लोग भी बाहर निकलो cave से and see the world for what it is. But
when he goes back to the cave to kind of free those prisoners with whom he shared a significant part of his life while being enchained, they basically they kill him because they're afraid and they're vulnerable of something which they have no idea about. And that again shows कि अगर आप for example if you're enlightened in the sense कि स्पिरिचुअल एसेंशन वाला एलिमेंट ले आओ या फिर आप इसमें ले आओ कि एनीथिंग समथिंग peculiar which is the truth but what the masses do not yet understand, अगर आप उनको बताते भी हो उस बारे में कि अच्छा यार ये देखो ये है माशरे के कुछ सच जो हम नहीं रियलाइज करते but this is the truth, those people will not believe you yet they'll want to harm you, they might even kill you for those truths. um, I don't know if I should be saying this here or not, लेकिन I personally face that because I देखो हम मेरा एक एक्सपीरियंस था बीइंग अ पाकिस्तानी ग्रोइंग अप इन पाकिस्तान। आई वाज़ ग्रोइंग अप और आप कुछ चीज़ें पेक्यूलियर होती हैं आपके आपके माशरे में। फॉर एग्जांपल you're brought up a different way in your own house, लेकिन जब आप बाहर जाते हो स्कूल में या कॉलेज में या फिर आप अपने घर के लोगों के अलावा किसी से डील करते हो तो यू सी कि अच्छा दीज आर द थिंग्स जो इन लोगों के लिए पेक्यूलियर हैं बट दिस वाजंट हाउ आई वाज ब्रॉट अप, राइट? You're faced with the absurdity of reality of living in society, especially Pakistani society. तो आई noted those things जिनको मैं explicitly अभी यहाँ पे बात नहीं कर सकता, और मैंने उन चीज़ों के बारे में एक आर्टिकल लिखा। और आई रोट एन आर्टिकल, मैंने मीडियम पे शेयर किया, उसके उस आर्टिकल के आया आई थिंक सो 1213 व्यूज़ आए। और आई फेस्ड अ लॉट ऑफ बैकलैश, मैनी पीपल अप्रोच्ड मी ऑन इंस्टाग्राम मोस्टली। मेरा जो बिजनेस है उसकी वेबसाइट पे मेरी मैनेजर का नंबर लिखा हुआ है, उसको लोग कॉल करके गालियाँ दे रहे हैं कि यार ये तो वो। तो आई रियलाइज्ड बैक देन कि अच्छा दिस थिंग विच आई बिलीव, नॉट बीइंग अ लिबरल बट बीइंग an open-minded person who knows कि अच्छा these are the faults of our collective community, हमारी सोसाइटी के faults हैं, and these are the things that you should strive to correct. And I wanted to do that being a writer कि अच्छा यार मैं आर्टिकल लिख सकता हूँ, तो मैं आर्टिकल लिख देता हूँ। मैंने लिख दिया and I faced that backlash and I saw how Plato made a lot of sense in this allegory, in this analogy, कि if you are somehow enlightened, or enlightened जो word itself is very big, but if you think you are and you've grasped the truth and you want to do something about it, you will not be able to, because जो लोग enlightened नहीं है, they are simply not ready to accept something different. Basically they do not want to change, right? So you can't change their opinions, और ये थोड़ा मैं टेंशन पे ले गया, but the इसका मकसद ये था इस एनालिसिस का, टू शो हाउ एजुकेशन can improve the soul, improve the virtue of your soul. और ये एनालिसिस सॉक्रेटिस पेश करते जिस तरह आई सेड how a person at the low level of the divided line can ascend through the divided line and become a philosopher by grasping the forms. So this is a very interesting analogy and I relate to it a lot क्योंकि we all were basically born into that cave of, into the platonic cave of ignorance, right? और हमारा काम होता है to find reality, our task is to find reality. लेकिन अगेन प्रोज एंड कॉन्स, राइट? कितना आपको फायदा है उस इग्नोरेंस में रहते हुए, लाइक पीपल से इग्नोरेंस इज ब्लिस, आई डोंट थिंक सो पर्सनली। या फिर कितना फायदा है बाय ग्रास्पिंग द ट्रूथ एंड फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट, क्योंकि काफ़ी आसान है टू काइंड ऑफ लिव इन इग्नोरेंस कि अच्छा यार सोसाइटी में ये मसले नहीं है, सोसाइटी में रोज़ 12 रेप नहीं होते हैं, आपका जुडिशियल सिस्टम करप्ट नहीं है, आपका पूरा सोसाइटी फक्ड अप नहीं है, ये सब चीज़ें मानने में बड़ा सुकून है, क्योंकि आपको रात को बहुत चैन से नींद आएगी। माय बल्ब इज फ्लिकरिंग, आई डोंट नो व्हाई। अच्छा, तो this was a very interesting analogy for me. I came across it like the first time I was reading Plato, maybe 1 or 2 years ago. Republic मैंने पढ़ी and I instantly connected with this allegory along with the ring of Gaiji's वाली analogy. So Naman, what are your thoughts about this? Yeah, thank you very much, Abdullah, for telling us in detail what the allegory of cave is all about. पहली बात तो ये कि yes, you were very right कि जिस तरह uh, the person who was enlightened and who was able to get out of that cave,
and who was able to come back to tell his fellow people कि देखो ये सब कुछ they were only mere shadows, reality lies outside this cave, मतलब कि जो reality है वो इस cave से बाहर है और तुम्हें इस cave से बाहर जाके देखना पड़ेगा reality को। और वो इन टर्न उसी बंदे के ऊपर जुल्म करके उसके ऊपर तशद्दुद करके उसको मार देते हैं। This is very, you can say, this is a bitter truth, or and sadness as well, because later in, because इससे हमें ये मालूम होता है कि Plato is kind of telling us about the death of Socrates as well in this dialogue, in this allegory. It also tells us about the struggles of philosophers in any time given, चाहे वो आज का वक्त हो या फिर आज से दो 2500 साल पहले का वक्त हो, क्योंकि जो भी इंसान चाहे वो फिलोसफर हो या ना हो, जो भी इंसान सच बोलता है ही इज met by violence बेसिकली। अब्दुल्ला, क्या ख्याल है आपका? यार यार हाँ, बेसिकली क्योंकि आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर एज वेल कि एवरीथिंग दैट इज डिफरेंट। मतलब देखो, दो लोग बात कर रहे हैं, राइट? अगर आई थिंक you're a relatively unbiased person, I think so, I am a relatively unbiased person as well. Like the people who are biased and they are having a discussion or conversation with someone else, so they are being on the defensive and offensive side at the same time, in the way कि अगर आप फॉर एग्जांपल खुदा के बारे में एक बंदे से बात कर रहे हो, मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, आई वाज टॉकिंग टू दिस पर्सन about the existence of God, or I basically realized early on in the debate or the discussion that this person, she's not ready to change her views in a way, because she was only refuting everything that I was saying without building her up her own argument, right? And when you see that in a lot of people, because what if they accept your view? What if they accept your view that you are right and they themselves are wrong? Because the repercussion of that will be that they will be something in their personality, something in their essence will be changed forever. अगर मैं आज अपना नजरिया बदल दूं, फॉर एग्जांपल एवोल्यूशन के बारे में या फेट के बारे में, फ्री विल के बारे में, तो समथिंग इन माय इंट्रिंसिक पर्सनैलिटी विल चेंज फॉरएवर। और उस चेंज से लोग डरते हैं कि हमने बस ये, अगर ये चीज़ जो अपोजिंग है हमारे अभी करंट व्यू से, अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे, तो दिस विल change the trajectory of our life, or our overall personality for the rest of our life. उस चेन से लोग डरते हैं, they do not want to accept the truth even if they realize it कि truth है, या अगर वो उनकी अपनी ignorance है कि वो उसको truth देख ही नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल तो अब्दुल्ला, हम्म ज़बरदस्त बात की आपने। मैं भी यही बात कहने वाला था कि इवन इफ़ यू आर्ग्यू विद समवन, अगर आप किसी से भी बात करो, आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि हम सब के अंदर एक फ़िलोसॉफ़िकल नेचर है, और सबकी, हर किसी की अपनी फ़िलॉसफ़ीज़ हैं जिसके अराउंड उनकी लाइफ़ या उनका फ़ेथ जो है वो बिल्ड हुआ होता है। एंड व्हेन यू डू डिस्कस दीज़ काइंड ऑफ थिंग्स विद एनीवन, उनको ये लगता है कि यू आर चैलेंजिंग देयर फ़ेथ और फ़िलॉसफ़ीज़, और अनकॉन्शियसली और अनकंट्रोलेबली वो आपके सामने, इफ ही इज़ नॉट एजुकेटेड पर्सन, वो आपके सामने एग्रेसिव बिहेव करना शुरू कर देता है, ठीक है? एंड और ही स्टार्ट्स टॉन्टिंग यू, वो आपको, यहाँ तक कि कुछ जगहों तो मैंने ये भी देखा है कि डिबेट के दौरान हाथापाई भी शुरू हो जाती है, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। हम्म ये दिस शोज़ कि हर इंसान की जो नेचर है, इट इज़ लिंक्ड विद फिलॉसफी, इट इज़ लिंक्ड विद फेथ, और जब हम उनको उसको चैलेंज करते हैं, वी आस्क देम टू बिल्ड एन आर्गुमेंट, उनके अंदर एक सोच होती है कि अगर दे आर अफ्रेड कि अगर दिस पर्सन इज़ एबल टू रिफ्यूट एनीथिंग, तो मेरी जो पूरी फिलॉसफी थी वो इट वुड क्रम्बल डाउन, और उसके साथ-साथ जो है मेरी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ फेथ है वो भी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। मे बी इसकी वजह से जो लोग हैं, इंसान की जो नेचर है वो ऐसी है कि जो उन्होंने एक एक सोशल नॉर्म्स के ऊपर अपनी फ़िलॉसफ़ी को बिल्ड किया होता है, दे आर अफ्रेड कि पीपल हू नो द ट्रुथ, दे विल ब्रेक देयर ब्रेन, वो उनका दिमाग ख़राब कर देंगे, या उनकी जो पूरी हम्म फ़िलॉसफ़ी ऑफ लाइफ़ की वो चेंज करनी पड़ेगी उनको, ठीक है? तो यस, ये सिर्फ़ जाहिल लोगों में नज़र नहीं आता, आई हैव इवन सीन दैट इन एजुकेटेड पीपल एज़ वेल। इसकी एक छोटी-सी सी एग्ज़ाम्पल ये है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोगों की जो पॉलिटिकल चॉइसेस हैं आजकल के दौर में, दे आर बिल्ड अपॉन व्हाट दे हैव हर्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स, और व्हाट दे हैव सीन देयर हम्म पेरेंट्स डूइंग इट, ठीक है? हम्म दे नो व्हाट इज़ रॉन्ग और राइट, बट
if you challenge that them, they think that you are challenging their parents, or you are challenging their philosophy, or you are challenging their fate. ठीक है। तो इसी की आड़ में अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को मैंने इतनी स्टूपिड हरकतें करते हुए देखा है, और ऐसी ऐसी चीज़ों को डिफेंड करते हुए देखा है कि अ पर्सन वुड थिंक कि हाउ कम दिस गाय इज एबल टू रिफ्यूट ऑल, वी कैन से, all these things that I'm saying without giving any specific or and any enough reason. तो अब्दुल्ला, ये बात आपने बिल्कुल ठीक की कि मे बी हम सब के अंदर एक फ़िलासफ़ी का एक एलिमेंट है। हम सब की जो फ़िलासफ़ी है इट इज़ बिल्ड अराउंड फेथ, और हमारी जो फ़िलासफ़ी है इट कम्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स। सो इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन आवर सोसाइटी कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो किस तरह बच्चों को बड़ा करते हैं और किस तरह बच्चों को एजुकेट करते हैं, और किस तरह उनकी एक जो बेसिक फ़िलासफ़ी है जो उनकी छोटी सी उम्र में बन जाती है उसको किस तरह शेप करते हैं। क्या ख्याल है? यार आई ऑल्सो थिंक इट्स कनेक्टेड टू आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एज वेल, क्योंकि अगर तो आप एक रैशनल पर्सन हो ना, तो यू विल नॉट लेट एनीथिंग गेट अटैच्ड टू योर आइडेंटिटी। अगर आप एक रैशनल पर्सन हु चूजेस टू फॉलो रैशनैलिटी, और जो अंदर से इतना इंट्रिंसिकली वीक नहीं है और इतना शैलो नहीं है कि वो अगर फॉर एग्जांपल एक मुसलमान है तो कहेगा कि मैं सिर्फ एक मुसलमान हूँ, और अगर एक इंसान सुन्नी है तो कहे कि सिर्फ मैं एक सुन्नी मुसलमान हूँ और मेरी आइडेंटिटी यही है सिर्फ, वो अंदर से इतना खाली नहीं होगा एक रैशनल इंसान। बट ऑन द अदर हैंड पीपल हु आर शैलो इनसाइड, हु डू नॉट नो हु दे आर, जिनको अपनी पर्सनैलिटी अपनी आइडेंटिटी का पता नहीं होता, दे अटैच देयर आइडेंटिटी टू बिकम अ पार्ट ऑफ द हर्ड इन नीड्स टर्मिनोलॉजीज, और वो उस हर्ड को फॉलो करता है टू काइंड ऑफ गिव अप इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ताकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ हर्ड कोलेक्टिवली फॉलो करे और आपकी ज़िंदगी से रिस्क निकल जाए। ये काफ़ी टेंजेंट पे बात चल रही है कि ब्रिंगिंग इट बैक टू द कोर ऑफ द डिबेट इज कि एक पीटीआई फॉलोअर बेसिकली कहता है कि यार मैं एक इंसान से पहले एक पीटीआई फॉलोअर हूँ, एक पीटीआई की या फिर फॉर एग्जांपल नून लीग का सपोर्टर कहता है कि यार मैं एक नून लीग का सपोर्टर हूँ, ये मैंने अपनी आइडेंटिटी का पार्ट बना लिया, क्योंकि मेरा मेरा बाप तो गलत हो ही नहीं सकता, राइट, मेरी मेरी माँ तो मेरा दादा गलत हो ही नहीं सकते, वो भी नून लीग के सपोर्टर थे, मैं भी नून लीग का सपोर्टर हूँ, ये मेरी पर्सनैलिटी का पार्ट बन गया है। तो अब मैं इसको, कोई भी मुझे कुछ बात करेगा तो आई ब्रिंग आउट द मोस्ट एब्सर्ड ऑफ रीजनिंग्स, और मैं अपने आप को बस गलत साबित होने नहीं दूंगा। सो वंस यू डू दैट, यू नॉट ओनली रैशनल, you're conducive to your own success or your growth basically. So it's like I was reading this book यार, क्या नाम था, रूसो की किताब थी द मिथ ऑफ सिसिफस यार, और इसमें रूसो बात करता है, जीन जैक रूसो के द एब्सर्ड कॉन्सेप्ट पेश करते हैं इन वेरी शॉर्ट टर्म्स। द एब्सर्ड कॉन्सेप्ट ये है कि यार एक इंसान अपनी ज़िंदगी में ढूंढता है मीनिंग, पर्पस ढूंढता है, मीनिंग ढूंढता है, लेकिन उसको मिलता सिर्फ केओस है, उसको ऑल्टरनेटिव केओस मिलता है, उसको मीनिंगलेसनेस मिलती है। अब रूसो गलती कहाँ पे करता है, रूसो पहले फॉर एग्जांपल प्रिज्यूम करता है कि खुदा नहीं है, विदाउट टॉकिंग अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड कंक्लूड करता है, कोई आर्गुमेंट पेश नहीं करता, बस कंक्लूड करता है, एज्यूम कर लेता है कि खुदा नहीं है, और कहता है कि जो भी इंसान कोशिश करेगा ना कि अपना वो मीनिंग ढूंढे खुदा में या रिलीजन में, वो गलत है। ही प्रेजेंट्स हिज प्रेमिसेस इन सच अ वे कि उनकी कोई सपोर्ट नहीं है, और उसका कंक्लूजन ये है कि अगर आप रिलीजन वाले राउट पे जा रहे हो तो यू आर कमिटिंग अ फिलोसॉफिकल सुसाइड, अगर आप सुसाइड वाले किसी तरह में जा रहे हो तो कमिटिंग literal suicide. So the only path is to live a meaningless life and to find joy in it. So I was reading that book and I was like, जो entire period था enlightenment का after the Renaissance, it was characterized by such writers, such authors like Rousseau, who kind of wanted to ride the wave. Or it's, I think so, it's great intellectual dishonesty, क्योंकि you're firstly assuming a lot of things without knowing the truth। अगर तो वो argue करता for the existence of God, या फिर उसको rational terms में proof करता है God does not exist, I would have given him the credit where it was due। लेकिन it's again it comes back to allegory of the cave कि you will still find ways to continue believing what you want to believe by presenting the most absurd of reasonings, by refuting everyone who might have found the truth। So you see that everywhere। आप जिस भी इंसान को देखते हो, आप हर बंदा अपनी गफलतों में मसरूफ़ है। आई गो टू अ यूनिवर्सिटी हियर इन लाहौर, और यहाँ पे आपको इस तरह के नमूने मिलते हैं कि आप देखते हो कि यार यू सी देम एंड यू सी कि वो लाइफ में क्या कर रहे हैं और वो कहाँ पे जा रहे हैं, हाउ दे आर वेस्टिंग एवरी वेकिंग सेकंड ऑफ देयर डे, और आपको पता And है how इसकी they are okay ट्रेजेक्टरी with क्या it, है। and how हाँ they are हाउ okay with देयर, it. और वो फॉर एग्जांपल वो गफलत में है भी,
और वो गफलत के साथ साथ वो खुश भी हैं उस गफलत में, तो आप फिर you just have no option but to distance which is from the most part of society. And so you kind of lonely as well, because that's one of the repercussions of having that sort of a mind. Not saying that I have that kind of a mind, but it happens to most people who have some kind of have reached some kind of enlightenment, कि वो अपने आप को isolate कर लेते हैं, trying to look for people like them, लेकिन उनको मिलते नहीं, क्योंकि most part of society is materialistic और most part of society is still stuck inside that cave. तो वो फिर आइसोलेट करते हैं, फिर उनका अपना पैराडॉक्स चलता है कि अच्छा एम आई ऑन द राइट पाथ, वो पैराडॉक्स होता है उनके साथ कि अच्छा शायद मैं ही गलत होऊंगा। तो इट्स एन एंटायर फेज, बट द फर्स्ट स्टेप इज ऑब्वियसली द रियलाइजिंग दैट यू इनसाइड द केव। निकलना बात की बात है, इफ यू ओनली रियलाइज इट, दैट्स द फर्स्ट स्टेप, आई थिंक सो। Abdullah, you were so true over there. Okay, yes. It comes a phase कि you are not able to find people like yourselves, and you try your hard, you try your best. मेरे साथ भी काफी ऐसा हुआ है और अभी तक होता आ रहा है, बट इट्स गुड दैट वी हैव कंपनी ऑफ ईच अदर्स, और हम एक दूसरे के साथ चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, विच इज़ आई थिंक very fortunate in this time period and in this world, the world we are living in right now. But here we are going on a different tangent now, so I'll bring back us to the allegory of cave, Abdullah. So yes, basically, like just before you were discussing uh, about the existence of God, इस allegory of cave में जो sun is knowledge, it's it's like told like the source of knowledge, ठीक है, or knowledge or source of knowledge. What if we say कि सन जो है वो knowledge है, ठीक है, इस knowledge तो है ही, सन is God, ठीक है, सन is the existence of God which is the source of knowledge, ठीक है, in this allegory. तो अब्दुल्ला, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम में से कुछ इंडिविजुअल्स हैं who are trying their best to ignore God or to ignore his existence, और जब वो केव से बाहर निकलते हैं they see God, it's hurtful for them, या फिर it's painful for them, because they reflect upon their life and they think we have wasted so much time, and the time we have left, it would be a difficult part or it would be a different part. ये भी हो सकता है एक, और दूसरी बात ये अब्दुल्ला, ये भी हो सकता है कि आज के दौर में जो एथिज्म की एक पूरी वेव चली हुई है, एथिज्म की वेव के बारे में अगर सोचा जाए, इट इज़ बिकॉज हमें देखा कि ह्यूमन नेचर में कुछ लोग जो है वो एथिज्म को इसलिए इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस. दैट्स व्हाट आई थिंक, दे वांट टू लिव फ्रीली. एंड जैसा कि अभी तो आप उस राइटर की बात कर रहे थे, रूसो की बात कर रहे थे, रूसो भी यही कह रहा था कि लिव अ मीनिंगलेस लाइफ एंड ट्राई टू फाइंड जॉय इन इट. अ मीनिंगलेस लाइफ एक बहुत वेग सी टर्म है, मगर मीनिंगलेस लाइफ में बहुत चीज़ें जो हैं दे कुड बी नेगेटिव एज वेल, and they could have a negative impact on your surroundings or people living around you as well. तो yes, तो मेरे ख्याल में जो एथी if you are ignoring the existence of God, you are still living in that cave, or even if you find the God, it's a different part. But मेरे ख्याल में ह्यूमन की जो इंसान की जो पहली बेसिक नेचर ये है कि they don't really want to be held accountable. That is why they accept atheism as the way of their living. दूसरी बात ये है कि एक तो पहली बात ये होगी कि इंसान अकाउंटेबल नहीं होना चाहता, ठीक है, दे डोंट वांट टू बी हेल्ड अकाउंटेबल. दूसरी बात ये कि दे वांट टू लिव फ्रीली एंड मीनिंगलेस. कुछ लोग जो है वो फ्री या फिर मीनिंगलेस लाइफ गुजारना पसंद करते हैं. दैट इज़ वाई we have drug addicts, we have people who sleep on footpaths in fortunate countries such as वेस्ट ऑस्ट्रेलिया वगैरह में. यहाँ भी कुछ लोग जो हैं वो अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी छोड़ के दे वांट टू लिव अ मीनिंगलेस लाइफ. दैट्स व्हाई दे आर जस्ट लिविंग ऑफ पेंशन मनी, और दे आर जस्ट लिविंग ऑफ गवर्नमेंट मनी. They are spending their money on drugs and stuff. So meaningless life is a very big and vague term in terms of existence of God and in terms of your life. But do you want to put, or do you want to add something over here? Or do you want to refute anything I said? यार यू बेसिकली राइट इन सेइंग दैट, क्योंकि एक आप बात कर रहे हो अबाउट अ लाइफ दैट इज करेक्टराइज्ड बाय एथिस्टिक टेंडेंसीज, तो इट इज काइंड ऑफ अ फ्री लाइफ इन द सेंस के आप अगेन you're giving up your individual responsibility by saying के
um, क्योंकि क्योंकि you're basically saying कि अच्छा there is no God, and if there is no God तो there is no afterlife concept नहीं है, तो फिर आपका सज़ा जज़ा का concept नहीं है, सज़ा जज़ा का concept नहीं है, तो फिर no action is morally good, no action is morally bad. आप कुछ भी कर सकते हो, you know, you can sleep with your mother, you can rape people, you can do anything you want to do, क्योंकि उसके repercussions नहीं है, ना आखिरत है ना खुदा है. That kind of life sets you up for many absurdities जो आपकी नज़र में इंडिविजुअल लिबर्टी आप उसको बोलते होगे कि यार मेरी लिबर्टी है, मैं जो मर्जी करना चाहूँ मैं कर लूँ, मैं अपने अब एक मर्द से शादी कर सकता हूँ मैं, या फिर एनीथिंग लाइक दैट. कुछ भी आप absurdity को प्रूव कर सकते हो बाय जस्ट गोइंग टुवर्ड्स दैट राउट. अगेन it's like, yeah, you if you see those kinds of people now, you kind of understand where they're coming from, क्योंकि ये जो causal determinism वाला जो doctrine है, it kind of states के obviously we know जो भी आपकी ज़िंदगी में होता है it shapes up your mind. एक इंसान 40 साल का जो believe करता है कि अच्छा एक औरत जो छोटे कपड़े पहनती है she deserve to be raped. मैं एक अभी एक हुआ था वाकया उसको कोट कर रहा हूँ, तो वो इंसान की 40 साल की ज़िंदगी ने उसको मजबूर भी किया है कि वो इस स्टेज पे आके बात बोले. ही हैड नो अदर ऑप्शन. उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं थी. ही वाज़ गोइंग टू से दैट, क्योंकि उसकी 40 साल की कंडीशनिंग made that thing concrete in his head. Okay, you can't change his beliefs. So the only way Plato says it in this allegory of the cave is कि उसका हल बस ये है education. It might be too late for that 40-year-old man. उसके लिए बहुत लेट हो चुका है. उसकी पर्सनैलिटी कॉन्क्रीट हो चुकी है, जो कि आपकी 25-26 साल की उम्र तक हो जाती है. It's too late for that man, but you can teach his son not to be like his father by education. तो इस एलिगरी ऑफ द केव में भी प्लेटो बात करता है कि द ओनली वे यू कैन गेट आउट ऑफ द केव इज एजुकेशन, बाय एक्सप्लोरिंग, बाय ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट्स द पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस, बाय ट्राइंग टू निगेट आवर ओन प्रेमिसेस. हम जो मानते हैं, आपने जिस तरह डेकार्ड कहता है इन हिज डिस्कोर्स ऑन द मेथड के अंदर उसकी किताब है कि आप रैशनल इंसान वैसे ही बनते कि आप जो भी बिलीव करते हो, बिलीफ सिस्टम्स आपके जो भी हैं, आप लिखो, राइट दम ऑल ऑफ देम डाउन कि आप क्या बिलीव करते हो खुदा के बारे में, ज़िंदगी के बारे में, फ्री विल, फेट के बारे में, ऑल द थिंग्स इन मेटाफिजिक्स या फिर इन योर लाइफ्स फिलॉसफी विच मैटर टू यू, उनको लिखो एंड ट्राई टू रिफ्यूट दोज थिंग्स. उन चीज़ों के अगेंस्ट एक एक आर्ग्यूमेंट फाइंड करो और अनबाइस्ड होते हुए सोचो कि अच्छा ये जो अपोजिंग आर्ग्यूमेंट है, डज इट मेक सेंस मोर देन माई ओन बिलीव्स, एंड इफ दे डू तो शैटर ऑल योर बिलीव्स, शैटर द फाउंडेशंस ऑफ योर बिलीव्स, और वहाँ से ग्राउंड जीरो से आप स्टार्ट करो. एंड इफ़ यू डू दैट लॉन्ग इनफ तो आप एक रैशनल इंसान होगे, आपकी बिलीफ सिस्टम्स भी सही होंगे. And that is basically the first step of how you at least recognize कि you live inside that cave, और फिर आप उससे बाहर निकल सकते हो. And that is only through education. Education not in the sense कि universities वगैरह वाली education, it's personal education, working on your own self, working on your own personality growth, that is to say. मतलब वही एजुकेशन जो है उसको हम मिक्स कर रहे हैं बेसिकली. आज की जो आज के टाइम में देखा जाए एजुकेशन को हम मिक्स कर रहे हैं विद यूनिवर्सिटीज, विद एकेडमिक एजुकेशन, विद साइंसेज एंड स्टफ. मगर एजुकेशन, जिस किस्म की एजुकेशन की बात हम लोग यहाँ कर रहे हैं, दिस इज़ मॉरल एजुकेशन, दिस इज़ एजुकेशन अबाउट हाउ टू लिव योर लाइफ, दिस इज़ एजुकेशन अबाउट व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट, not about what is good or what is bad, but about what is wrong and what is right in this society and how we live. So Abdullah, how do you think, are we giving our children the due education or no? हाँ, एकेडमिक एजुकेशन तो पाकिस्तान में बहुत अच्छी चल रही है. लोगों की बिजनेस जो है वो चमके में, यूनिवर्सिटीज आर अर्निंग अ लॉट, प्रोफेसर्स आर मेकिंग गुड मनी. मगर मसला है कि आर वी मेकिंग गुड ह्यूमन बीइंग्स और आर वी जस्ट मेकिंग गुड रोबोट्स? यार उसका आंसर हम सबको पता है यार, कि यार इट्स बेसिकली अ कवर अप, इट्स अ फॉल्स लाइफ दैट दे सेल टू यू कि अच्छा दिस इज व्हाट वी वांट फ्रॉम यू, दिस इज द ग्लोरियस लाइफ दैट वी वांट फ्रॉम यू, कि आप एक 9 to 5 के साइकिल में फंस जाओ, अपनी इंडिविजुअल हैप्पीनेस और प्लेजरेबल परस्यूट्स के पीछे भागते रहो. एंड यार अगर आप इस साइकिल में भाग जाते हो ना, फॉर एग्जांपल एक इंसान है, राइट, उसने पूरी 40 साल 50 साल जॉब की है, 9 to 5 जॉब की है, ना अपनी फैमिली को सीधा टाइम दे सका, ना अपने अपने पैशन को परस्यू कर सका, ना ज़िंदगी का मकसद समझ सका, ना खुदा को समझ सका, ना खुद को समझ सका. ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच आई बिलीव आर नेसेसरी टू बी आंसर्ड इन दिस एग्जिस्टेंस, उन सबको उसने नहीं किया. बी ऑल फॉर दिस ग्लोरियस, यू नो, एक उसके दिमाग में इमेज बनी हुई थी कि ये है
सक्सेस की डेफिनेशन, दिस इज़ व्हाट आई विल गेट, कि मैं ये 4 साल यूनिवर्सिटी के लगाऊंगा, 2 साल मास्टर्स करूंगा, फिर पीएचडी करूंगा, फिर जॉब करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और मैं घर बनाऊंगा, गाड़ियाँ लूंगा, शादी करूंगा, सेटल होऊंगा, एंड ऑल ऑफ दैट, दैट्स द इमेज ऑफ अ परफेक्ट लाइफ दैट ही हैज़. बट व्हाट इफ ही वाज टोल्ड कि ऑल ऑफ दैट वाज सेकेंडरी, all of that was the purpose of life, but the secondary purpose of life. तो इट्स लाइक एजुकेशन की जहाँ तक बात है, it's very flawed. I don't think so कि it is even set to kind of prepare you for the challenges of professional life. जॉब वाली इंडस्ट्री की बात करो, आई डोंट थिंक सो. It's only a handful of universities which do that for you. Apart from all of that, it's like जितना मैंने यूनिवर्सिटी पढ़ी है, इन द थर्ड ईयर, इन द सिक्स्थ सेमेस्टर ऑफ माय थर्ड ईयर, फिफ्थ सेमेस्टर सॉरी. और मैंने अभी तक जितनी स्कूलिंग की है अपनी 22 साल, 20 साल ज़िंदगी में, 22 साल की, it's like none of that has helped me in my businesses. I started my businesses myself. I made them successful myself without some key concept जो मैंने पढ़े होंगे, not even all of those helped me. तो इट्स लाइक आपकी जो मॉरल एजुकेशन की बात है, इन द वेस्ट यू कैन से कि हाँ वहाँ जेंडर स्टडीज़ होती हैं, वहाँ पे बेसिकली मेटाफिजिक्स को, फिलोसफी पढ़ाते हैं आपको, मॉरल्स पढ़ाते हैं, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, डिफरेंसेस बिटवीन गुड टच, बैड टच, ताकि वो सारा अ चाइल्ड एटलीस्ट नोज हाउ अ पर्सन इज टचिंग देम when they're very young, ताकि they can immediately tell their parents, and वो वाला सीन. तो these things, these morals, these philosophical concepts that all of us need to know, वो यहाँ नहीं पढ़ाए जाते. एल में पढ़ाना शुरू किया था उन्होंने, आई थिंक 2 साल पहले, कंपेरेटिव रिलीजन, ताकि एक बच्चा जो है यंग एजेस में वो देखे, अच्छा यार हिंदुज़म ये सिखा रहा है, इस्लाम ये सिखा रहा है, क्रिश्चियनिटी ये सिखा रहा है, फिर वो बच्चा खुद से डिसाइड करे कि अच्छा व्हाट्स द राइट पाथ. तो आपकी गवर्नर पंजाब ने कहा कि यार नहीं, ये आप बंद कराओ, ठीक है, तो वो प्रोग्राम जो था वो शट डाउन हो गया. तो वाई आई थिंक दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. ऑब्वियसली बच्चा को अगर आप पढ़ा रहे हो क्लास में, जो बच्चा मुसलमान है बिकॉज ऑफ हिज पेरेंट्स, वो अगर बच्चा मुसलमान है, ही वाज बॉर्न अ मुस्लिम, तो ऐसा नहीं है कि यार वो बच्चे हिंदुज़म पढ़ेगा और वो कहेगा यार मुझे हिंदू बनना है. इसलिए उसका दिमाग खुलेगा विद अदर व्यूज़, राइट. अगर तो फॉर एग्जांपल एक बच्चा फेथ पे पैदा नहीं हुआ, उसके माँ बाप नहीं थे मुसलमान, एंड ही टीचिंग हिम कंपैरेटिव रिलीजन, ही कैन डिसाइड फॉर हिमसेल्फ कि यार अच्छा प्रोज एंड कॉन्स वे करेगा, अच्छा यार विच थिंग्स मेक्स सेंस टू मी सब्जेक्टिवली. So I think so those things are important for your individual growth, or yeah, you could be right in some sense कि आपको प्रोफेशनल फील्ड के लिए आपको प्रिपेयर कर देती है यूनिवर्सिटीज़, आपकी करंट एजुकेशन, बट नॉट फॉर ऑल द अदर ट्रबल्स दैट यू फेस इन योर लाइफ, जो सिर्फ मॉरल एजुकेशन आपको प्रिपेयर करती रह सकती है जिन चीज़ों के लिए. यस, महमदुल्ला, मैं एक बात देख रहा था कि काफ़ी जो बड़े बड़े दुनिया के जो नोटेबल पर्सनैलिटीज़ गुजरी दुनिया में, they all had some kind of homeschooling in their life. आप कायद आज़म ले लो, आप इलामा इकबाल ले लो, आप गांधी ले लो, किसी को भी ले लो, they all had some kind of homeschooling. तो homeschooling में मेरे ख्याल में जो बेसिकली मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, इट वुड बी टीचिंग अबाउट teaching moral education. Moral education, then you can give references from your religion as well. Then you can teach your kids a bit of philosophy as well, just to build a strong foundation of their beliefs, of their faith. But yes, the problem lies in our education system a lot. एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ भी हैं, पाकिस्तान में भी होंगे, वो पाकिस्तान में कंपैरेटिवली ज़्यादा है. और मैं देखा था अब्दुल्ला, वी वर टॉकिंग अबाउट अबाउट studying philosophy in Pakistan, which is near to impossible, because मेरे ख्याल में you told me कि no universities were offering any type of courses in Pakistan. आपने भी कर रही बताया हैं, कि लेकिन वो मेरिट नहीं है यूनिवर्सिटीज़ का, और उनके डिपार्टमेंट मेरिट ऑफ नहीं है. फिलोसफी भी इतना वीक है, कोई पब्लिश नहीं करते पेपर्स, कोई प्रोफेसर्स हम्म. को फ्रंट पे नहीं लेके आते, कोई स्कोप नहीं है, नॉट इवन द सैलरीज इटसेल्फ. It is maybe because it is कि लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, या फिर मसला ये कि yes, what can I say? But yes, I think so. We discussed Allegory of Cave very good and very in detail today. Anything you want to add before we finish this podcast, Abdullah?
यार, it's the same thing which I said in the last episode or the one before that. कि there's there are some defining moments in your life when you think कि अच्छा यार शायद मैं ही गलत हो सकता हूँ. I might be wrong. My belief systems might be wrong. There's time to change that. So if you first are true to yourself and to your values and to your principles and to what your current belief systems are, if you're true to yourself now and if you ration at the same time, both of these things will take many years of your life. बहुत साल लग जाएंगे rationality practice करते हुए. But if you somehow manage to do that, you manage to become a rational person and to be true to yourself, so you'll see how you're no longer ignorant, you're no longer inside that cave of ignorance. You only need these two qualities to be a rational person and to be true to yourself. That's what I believe about how to get out of that cave. Or education is obviously important, your upbringing, your conditioning is important. अगर if you have a overprotective mother or parents जो आपको basically spoil कर रहे हैं, right? तो ये आपको तो 30 साल लग जाएंगे अनलर्न करते हैं वो सारी कंडीशनिंग. तो वंस यू डू दैट, वंस यू बिकम अ रैशनल पर्सन, अंडरस्टैंड कि मुझे लर्न से पहले वो सारा बैगेज अनलर्न करना पड़ेगा जो मेरी पास्ट का, मेरे एक्सपीरियंसेस का, मेरी कंडीशनिंग का पार्ट है. तो वंस यू डू दैट, दैट्स आई थिंक सो द फर्स्ट स्टेप. द रियलाइजेशन इट सेल्फ द फर्स्ट स्टेप. क्योंकि मेरा एक दोस्त है यार, हाँ, ही एक्ट्स इन अ वेरी वियर्ड वे. ठीक है, उसके बारे में काफ़ी लोगों ने, काफ़ी लड़कियों ने मुझे आके बोली बात कि यार ये जो लड़का है ना, ये इस तरह का लड़का है. और मेरी जब उससे दोस्ती, मैंने वो चीज़ें नोटिस की उसकी पर्सनैलिटी के बारे में. फिर आई वेंट टू हिज हाउस, राइट. उसके मैं घर गया, डिनर टेबल पे बैठे हुए उसकी अम्मी और उसके अब्बू बैठे हुए, उसका भाई बैठा हुआ. मैंने नोटिस किया उसकी अम्मी अब्बू का रिलेशनशिप का डायनामिक, हाउ दे बिहेव अराउंड ईच अदर. मैंने उसको देखा कि उसका अब्बू फुल एक डोमिनेंट टाइप है और उसकी अम्मी फुल सबमिसिव टाइप है. मैंने सिर्फ उनकी डायनामिक नोट किया 5-7 मिनट के, एंड अंडरस्टूड why that person is the way he is. तो इट्स लाइक आपको हर बंदे में नजर आता है कि अच्छा, यू सी हाउ देर एक्टिंग एंड व्हाट इन देयर पास्ट इज कॉजिंग दैट. सो द फर्स्ट स्टेप फॉर देम इज टू बेसिकली रियलाइज कि वो जो वियर्ड हरकतें कर रहे हैं, उनके जो बिहेवियल पैटर्न्स अगर हैं मस्ट अप, तो वो क्यों है. वंस दे रियलाइज दैट, तो एवरीथिंग एल्स व्हिच फॉलोज विल रिजल्ट इन देम लिविंग, गेटिंग आउटसाइड ऑफ दैट केव ऑफ इग्नोरेंस. मगर यस, इसमें जो पहला चैलेंज है, इट वुड बी to to think where you are wrong, or to accept wherever you wrong. uh, I think आज के दौर में, if you, even if you are thinking about your actions later in the night, अगर आप रात को सोते हो और आप सोने से पहले 10 मिनट निकाल के ये सोचते हो कि आज मैंने क्या किया, जिसमें से क्या गलत था और क्या सही था, I think a lot would change in every individual's life if they start thinking about their actions on daily basis, अब्दुल्ला. बिकॉज मेरे ख्याल में एक रैशनल बंदा ही केपेबल होता है ऐसा काम करने के कि वो रात को या कभी भी दिन में अपने एक्शंस के ऊपर सोचे और रिव्यू करे कि व्हाट आई डिड वाज राइट और व्हाट आई डिड वाज रॉन्ग. और यहीं से आपकी आप कह लो कि आपके अंदर एक सेल्फ अवेयरनेस आती है कि एक आपके अंदर एक सेल्फ अवेयरनेस पैदा हो जाती है, और जिसके अंदर एक नॉलेज का टर्म आता है कि जैसे कि आपको पता होता है कि आपने किस तरह किस तरीके से बात करना है, कैसे बिहेव करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना. बट this all comes from one place, which is to accept wherever you're wrong and the way you were thinking was wrong or right. मगर मसला ये है कि आज के दौर में बहुत सारे जो लोग हैं, they don't really recognize and they are not ready to accept where they were wrong, or if they could be wrong or no, or even the people they are pursuing right now, they are on the right path or no, or they are on the wrong path. अब्दुल्ला, यहीं पे आज की पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं. बहुत ज़बरदस्त पॉडकास्ट थी, because we had a detailed discussion about Allegory of Cave, and as usual you shared a lot of good info. और या और एक स्पेशल बात ये भी है कि ये हमारी 30th पॉडकास्ट है अब्दुल्ला. इफ़ यू नोटिस, हमारे बैनर से ये हमारी 30th पॉडकास्ट है. और यस, वी स्टार्टेड वे बैक इन आई थिंक सो जुलाई of this year, and this is and yes, and this is like आज यहाँ तो 30th दिसंबर हो गई, मगर पाकिस्तान में शायद 29th हो इस वक्त. So I'm very happy with the progress we are making.
or hopefully in the coming years this 30 would turn into 200 and then 300 and then 400 or 500, inshallah. And one day we would sit together and see how our ideas changed over time. What do you think, Abdullah? यार हाँ, हमारा ये बेसिकली नुमान और मेरा ये गोल नहीं था कि हम लोग फॉर एग्जांपल वो पॉडकास्ट फॉर एवरीवन होती है ना, कि वो एक सेलिब्रिटी को बुलाते हैं, उस फन तरह के सवाल पूछते हैं उससे, अच्छा how many girls have you dated, या फिर कुछ इस तरह मसालेदार सवाल to go viral and all of that. तो it's not one of those fun podcasts. It's not, अच्छा मैं नाम obviously नहीं लूंगा उन podcast के, लेकिन उस तरह के podcast आप they're very, it's very easy for them to get viral, to get a fan base. But we're not trying for that. This हमारा इसका मेन मकसद ये है, हमारा this is we basically I am being selfish here. Selfish in the sense कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, not to become famous or anything, but ताकि मैं आज से 5 साल बाद 10 साल बाद जब कोई एपिसोड देखूँ खोल के, तो मुझे पता चले कि अच्छा मेरी जो थॉट्स हैं, मेरे जो इंटेलेक्ट है या मेरे जो थिंकिंग प्रोसेस है, वो कितने प्रोग्रेस किए हैं अभी तक. तो इट्स फॉर अस बेसिकली, वी नॉट ट्राइंग टू बी कि हमारे 10,000 या लाख फॉलोअर्स हो जाएं, सब्सक्राइबर्स, नथिंग नथिंग लाइक दैट. इट्स जस्ट some people who want to join us on this journey of intellectual progress, so they can progress with us. That's basically the core of this channel. और बिल्कुल सही बात की अब्दुल्ला, अगर हमने फेमस होना होता तो आज हम क्या करते, आज हम वीडियो बनाते रिएक्टिंग टू वायरल डांस इन पाकिस्तान। हम दोनों अपनी स्क्रीन छोटी करके लड़की का डांस बड़ा करके उसके ऊपर रिएक्ट कर रहे होते, या फिर एंड्रयू टेट के ऊपर रिएक्ट कर रहे होते, ठीक है। इस तरह की वीडियोस में लोगों को देखा है बनाते हुए इंटरनेट के ऊपर, रिएक्टिंग टू सॉन्ग्स, रिएक्टिंग टू फलां वीडियो, और उनके अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे होते हैं because they are just riding the bandwagon. But yes, we had a original idea, and बेसिकली बिल्कुल सही बात की, वी आर समवट सेल्फिश इन दिस टर्म कि हम सिर्फ ये अपने लिए बना रहे हैं, मगर आई थिंक सो प्रोफेशनलिज्म किसको भी हम सामने फॉलो करते हैं। सो इफ़ एनीवन इज लिसनिंग, ही कुड हैव अ गुड एक्सपीरियंस, ही कुड हैव अ मेलो एक्सपीरियंस। वो आराम से बैठे सुने, अपने कोई भी डेली वर्क कर रहे हैं, ही कुड गेन समथिंग फ्रॉम आवर पॉडकास्ट होपफुली, और वी कुड help them to achieve something morally if they are watching these kind of podcast. But yes, anyways, if anyone is watching, thank you very much. They could leave their comments. We do read all the comments and we do try to reply to them, apart from the mean ones. Yep. So that's it. No worries. Guys, we will catch you in the next podcast. Till then, take care. Hafiz.